Before starting this lesson, we need to learn some basic points. Like genetics, it is the branch of biology which deals with inheritance and variations of characters from parents to offspring. जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इस बात पे स्टडी करते हैं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं वो कैसे होते हैं. Now next point is inheritance. It is the process by which characters or traits are transferred from one generation to the next. अगर बेसिक इंग्लिश की बात करें तो फिर इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि फादर की जो प्रॉपर्टी है या उनका जो पोजीशन है वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में किसे मिलेगी. एंड इन बायोलॉजी इनहेरिटेंस इज़ द होल प्रोसेस अबाउट कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स जो पास आउट होते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, उस प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस. नाउ वेरिएशन. It is the degree by which progeny differs from each other and with their parents. Humans knew from as early as 8000 to 1000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction. So, अगर पेरेंट्स के कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में एक्वायर हो रहे हैं या फिर वो एक्वायर कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर, सो दिस इज़ सो ऑब्वियस कि सारे कैरेक्टर्स तो उन्हें नहीं मिलेंगे कि पूरा ही कॉपी बन जाए. हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है क्योंकि उसमें जो गैमीट्स होते हैं वो फ्यूज़ नहीं करते हैं, तो उसमें जो वेरिएशन होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में देखने को नहीं मिलता है. बट इन केस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देयर आर सम वेरिएशंस that are in offsprings and they are not the true copy of their parents. So many years ago, the famous scientist Gregor Mendel, he was the first one to conduct experiments to learn about the inheritance or the pattern of inheritance. He was the one who used the plant. Yes, he used the garden plant that was growing in his garden only, and with that plant he had explained the whole phenomena of inheritance or the passing of the characters from one generation to another. So during mid-19th century, Gregor Mendel observed the pea plants which was in his garden. He observed that there was some contrasting characters in his pea plants, that every plant was not the same. For example, अगर किसी प्लांट का कलर पर्पल था तो किसी और पी प्लांट का कलर वाइट था, तो उन्हें ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और उन्हें ये पता करना था कि ऐसा हो क्यों रहा था कि अगर प्लांट एक है तो उसमें इतने सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो कैसे सकते हैं. फ्लावर्स अलग थे, पॉट का शेप अलग था. ऐसे ही उन्हें टोटल 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिखे उनके पी प्लांट में. तो उन्होंने उस पी प्लांट के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए एंड ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट फॉर 6 years from 1856 to 1863. जो गार्डन पी प्लांट उन्होंने लिया था वो बेसिकली उनके गार्डन में तो था ही, बट उन्होंने उस प्लांट को अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ कुछ रीजंस की वजह से भी किया था. द फर्स्ट रीज़न वॉज दैट द लाइफ स्पैन ऑफ पी प्लांट इज़ नॉट टू लॉन्ग and the pea plant has some easily observable characters. क्योंकि अगर उन्हें इनहेरिटेंस का पूरा पैटर्न जानना था तो उन्हें कुछ ऐसा प्लांट लेना पड़ेगा अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जिसके कैरेक्टर्स को वो अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें, अच्छे से देख सकें. The characters or the contrasting characters observed by Mendel were seed shape, seed color, flower color, pod shape, pod color, flower position and the stem height. In seed shape, he observed 2 contrasting characters that were round and the wrinkled. The round was the dominating character and the wrinkled seed was the recessive characters. Yes, the word dominating and the recessive depends upon the characters that were shown very earlier. Yes, that were able to express
themselves in presence of the another character. The contrasting character for seed color were yellow seed and the green seed, and about flower color was the violet and the white flower. The violet or the purple, you can say, purple was the dominating character and the white flower was the recessive character. Pod shape, full pod and the constructed pod. Constructed pod was the character of recessive and the full pod was the dominant character. In pod color, green pod was there and yellow pod was there. Green pod was the dominating character, whereas the yellow pod was the recessive character. And the flowers were also located at the different position. Like some flowers were located at the axial position and some plants were located at the terminal position. The axial position flower was the dominant character and the terminal position flower was the recessive character. And about the stem height, the tall plants were the dominant character and the dwarf plant were the recessive characters. So these were the contrasting characters used by Mendel.